Hello, welcome to the episode number 3 of B-Boy Guide. This is B-Boy Grace representing Bishmore to India. So guys, आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ 3 simple things to make your top rock look more dynamic. So guys, let's begin. Alright guys, so let's take cross step for an example. So this is our cross step. Cross and kick, cross and kick, cross and kick. Okay, so ये एनर्जी के साथ में कुछ ऐसा होता है. Alright guys, so what we can do is हम लोग इसमें ट्रैवलिंग ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम आगे ट्रैवल कर सकते हैं यही बेसिक स्टेप में. Then we can go backward. Or we can go to the sides this way. Yeah, so let's see how it looks with the energy. Fine, let's go. Okay, so second way is like you can change your levels in your top rocks. So let's take Indian step for an example. Kick, Indian, kick and Indian. Yes. Okay. So let's do it in energy. Yes. So हम लोग इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेवल चेंजेस कर सकते हैं. So we can go little down. We can go up. Jump कर सकते हैं. Then we can be more creative and try different things by changing levels. So let's do it in energy. And in third one we can use spin or turns to make our top rock look dynamic. So यहाँ पे अभी हमने साइड स्टेप लिया फॉर एग्जाम्पल. लेट्स डू इट इन एनर्जी. यस, सो अभी हमें इसमें स्पिन ऐड करना है फ्रॉम बोथ साइड्स. दिस वे और दिस वे. हम लोग लेग्स का भी यूज कर सकते हैं स्पिन करने के लिए. Alright, so now let's do it. Okay, so now we can try to mix up everything all together at the moment. Travel, levels and spins. So let's do it. ओके गाइस, सो ये थे 3 चीज़ें जिससे आप आपके बेसिक टॉप रॉक्स को थोड़ा एडवांस बना सकते हो, जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ वाइल टॉप रॉकिंग. एंड गाइस, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, गो चेक आउट द B-Boy गाइड प्लेलिस्ट फॉर मोर ट्यूटोरियल्स इन इट. एंड गाइस, मैं और भी ट्यूटोरियल्स अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे. और भी ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं एवरी वीक. सो गाइस, स्टे ट्यून्ड. दिस इज B-Boy Grace साइनिंग आउट. पीस.